Hello friends, how are you all? So as I promised, today we are going to learn a new topic which is negative components big friends. As the name suggests, negative means we are going to subtract, right? We will be having questions where we need to subtract a number. Big friends. Big friends means here again we will be having base as 10. आपका base रहेगा 10. ठीक है. आपको अभी तक इतना आई बिलीव क्लियर है कि आपको जब किसी नंबर को ऐड करना है आपको बीट्स को आंसर बार की तरफ लेके जाना है। जब आपको किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो बीट्स को आंसर बार से दूर लेके जाना है। क्यों? क्योंकि आप जब आंसर देखते हैं तो आप उन्हीं बीट्स की वैल्यू काउंट करते हैं जो आंसर बार को टच कर रहे हैं। राइट? आंसर बार कौन सा है? दिस इज योर आंसर बार। ओके, दिस इज योर आंसर बार। सो अगर कोई बीट आंसर बार को टच कर रही है हम सिर्फ उसी की वैल्यू काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे अभी कोई बीट आंसर बार को टच नहीं कर रही है। सो राइट नाउ दिस अबैकस इज रिप्रेजेंटिंग नंबर 0। अगर मैं इस बीट को ऊपर कर देती हूँ, so right now this abacus is representing number 2, right? Because two beads are touching the answer bar and these two beads are on the unit place, right? So 2 or 0 2, same thing. 9 add 1 less 9, right? So how do you make 9? Plus 5 plus 4 6 7 8 9, right? This is 5 6 7 8 9. Now you have to add 1. आपको 1 add करना है बट आपके पास कोई बीड अवेलेबल नहीं है, राइट? सो हाउ विल यू ऐड 1? This we have already done in our positive component big friends. Plus 1 is plus 10 minus 9. Alright. So plus 10 minus 9. आपने 10 प्लेस पर जाके एक बीट को ऊपर किया because this bead is having value as 10 and you subtracted 9 from the unit place. Now you have to subtract 9. अब 9 subtract करना है तो क्या करेंगे? जैसे आपको प्लस 9 जब आपको करना था तो आपने किया था प्लस 10 माइनस 1। इसका ठीक ऑपोजिट अब माइनस करना है, फॉर्मूला सेम रहेगा 9 10 1, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस करना है, ये इस साइड जो नंबर होता है उसका साइन एंड जो बेस का साइन होता है वो हमेशा सेम होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है और उसके साथ वाला ऑपोजिट हो जाता है, राइट? सो इफ दिस इज so if this was plus 10 plus 9, so if this was plus 9 then plus 9 is equal to plus 10 minus 1. Now if this is minus 9 then minus 9 is equal to minus 10 plus 1. So sign will get changed. ठीक है, तो माइनस साइन करना है तो माइनस 10 प्लस 1। आपने 10 जिस बीट की वैल्यू 10 है उसको आंसर बार से दूर कर दिया और जिस बीट की वैल्यू 1 है उसको पास कर दिया, because for subtraction you have to move the bit away from the answer bar and for addition you take the bit towards the answer bar, right? Now what is your answer? 1. Got it? Correct. If not then please see it again. Let's move to our next question. 72. Let's take a bigger number. 72 minus 9 add 7 add 5. Alright. How do you make 7? 7 on the tens place, 2 on the unit place. 5 6 7. 7 on the tens place, 2 on the unit place. This is your 72. Now you have to subtract 9. Minus 9 is equal to minus 10 plus 1, right? Minus 10 means you take one bit away from the answer bar. माइनस 10 करने के लिए आपको एक बीट आंसर बार से दूर करनी है और प्लस 1 करने के लिए वंस प्लेस पर एक बीट आंसर बार की तरफ करनी है, ठीक है? Now you have to add 7 plus 7. This time you need to use the formula for the positive component big friends. Why? Because आप add कर रहे हैं, right? Positive component means addition, negative component means subtraction. Simple. So plus 10 minus 3. Plus 10 minus 3, right? Then you have to add 5. 5 कैसे add करेंगे? You would simply move this bit down. This is your 5. Answer is 75. And you can always check your answer with your calculator.
72 less 9, add 7, add 5, 75. Thumbs up. So that's all for today's video. See you in the next video with the formula for minus 8, which is minus 8 is equal to minus 10 plus 2. Till then, keep practicing. Bye.